Yes, my God, I have to. Okay. Uh, mm, Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 20, and this time we have to study the boost converter, and we will do some derivation of the boost converter. We know from the buck converter that the buck converter steps down the voltage at the output, and the boost converter is the converter that steps up voltage at the output. What should be the criteria that this converter will increase the voltage at the output? But one criteria, although there are many criterions, but what I have to, I will take only one criterion, I think. So the if in the buck converter we used only one storing element, that was the inductor, but in the boost converter we will use more than one element, more than one storing element. So probably in this case, because we will have more than one storing element, at the output we will have higher voltage. So taking this idea, we have to learn this topic today. And so the book boost converter. So we can see here, this is the boost converter circuit, and we will start to learn this one from the very beginning. And this might be possible कि when you see this circuit first, it looks difficult and complicated, but soon you go through these slides, it is not a difficult circuit. It's, in fact, it's a very basic and the simple circuit, easy to understand circuit. So so in this circuit, what we can see here, there are a couple of more element. For example, in the buck converter, we use the inductor voltage, we use the transistor. Okay, but here we are using one more storing element, that is the capacitor. So in the buck converter, we were having only one storing element, and in this boost converter, we have this storing element, and also we have capacitor as a storing element. So if the inductance is quite, so in this case, we can see the inductance opposes the change in the current. So inductance, one of the storing element, is located at the input side of the supply. Okay, this is the input side of the supply. When this switch is on, what will happen? When this switch is on, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इफ ये जो पल्स है, इस पल्स पे ये स्विच ऑन है, तो ऑन का मतलब ये ग्राउंड हो गया. So this is completely grounded. So all the supply is appearing across the inductor, and it's going to energize this inductor by having this loop. Okay, and when this is when this switch is on, what happens to the diode? Switch on है, diode उस वक्त on होगा when the anode is at higher potential than the cathode. That's this is the problem someone making. Okay, I hope you are all listening me. शायद किसी ने म्यूट कर दिया था मुझे. अगर किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो let me know. Otherwise, I will change the preference, the setting of this meeting. Okay, so in this circuit, we can see there are two elements, inductor and the capacitor. Inductor is connected at the input side, so it's responsible for the input current, and the capacitor is connected at the output loop.
So it's responsible for the output voltage, right? So it is stated that अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, इंडक्टर if the inductance is, तो क्या होगा, इनपुट रिपल कम हो जाएगा. And what is input ripple? Input current is basically II. So in order to make input less fluctuated, so then the inductance value should be very high. Similarly, अगर आप output, this capacitor is directly connected with this output. If इस कैपेसिटर की वैल्यू अगर हम ज्यादा रखेंगे तो आउटपुट में रिपल्स कम हो जाएंगे, आउटपुट वोल्टेज में रिपल्स कम हो जाएंगे. So this is stated here. If the inductance is quite large, the source current II will become ripple free and can be considered as constant input current. And this next is the next, yes. Similarly, if the capacitor voltage is quite large, then the output voltage will become ripple free and can be considered as constant. So input can be ripple free or constant if this is very large, and the output voltage will be constant if this is very large. So this is the equivalent circuit. The first we consider the switch on. Here in the original circuit, as we have seen before, in the original circuit here there is a diode. So we have to see if this switch is on, what happens to the diode. If this switch is on, it means this is providing a ground circuit. So all the currents are flowing from source supply to the inductor and it's grounded. So this is one of the loop. And in this case, the diode will be reverse bias. So why? Because the diode anode is directly connected with the zero voltage or the negative voltage. So this is open circuit when the switch is on. So okay, जो ये हमने जो next slide में जो switch on की हमने दिखाई है, you should now understand कि जब switch on होगा तो grounded होंगे और ये diode reverse bias होगा. So the same thing we have described here. The switch is on, input DC voltage is this one, and the switch is on, and the diode is removed because the diode was reverse biased. And the current, the entire input current is injecting inside the inductor, and the inductor is getting energized now. So the one conclusion is, okay, for the on period, the inductor is getting energized. Inductor energized हो जाएगा. The longer the on period, the inductor will energize for the longer value. Okay, and what happens to here? This is the output voltage. It looks, if you watch this equivalent circuit, it looks that it has two independent loops. One is the input loop and other is the output loop. What happens to the input loop? That during the on period, the current is getting through this loop and the inductor is energizing at higher value. Okay. And at the same time, simultaneously, what happens to this one? Let's assume कि ये जो कैपेसिटर है वो पिछली साइकिल में फुल चार्ज था. हम assume कर लेते हैं. Later on we will understand कि yes, it was really fully charged in the previous cycle. So now if we suppose कि capacitor fully charged था, so during the on period, what happens? The capacitor is fully charged and this is in parallel with the load, with the output load. So the capacitor will de-energize. Sorry, the capacitor will discharge its coulombs through this loop. So the output voltage, we will get, there will be a flow of the output current, and this output current is basically the capacitor discharge current. So the capacitor discharges, जब capacitor discharge होगा इसके voltage कम हो जाएंगे, लेकिन this voltage will convert to the capacitor current and the current will increase. जितना capacitor discharge होगा उतना ही यहाँ पर current increase हो जाएगा. The more the current, the capacitor current ज़्यादा increase होगा, output voltage भी आपके पास increase हो जाएगी. So it's basically the conversion of the energy. Let's we say कि यहाँ पर
इस जगह पे इंडक्टर स्टोर कर रहा है एनर्जी, और इस जगह पे जो कैपेसिटर ने पिछली साइकिल में एनर्जी स्टोर किया था वो उसे डिस्चार्ज कर रहा है टू द लोड. दिस इज द फंक्शन ऑफ द ऑन स्विच ऑन. नाउ द फंक्शन ऑफ द स्विच ऑफ. ऑफ कंडीशन में क्या हुआ है? Let's go back to the original circuit and we have to see what happens to the off. When this switch is off, तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया. जब ये ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं है. The supply is directly connected with the current will flow through this inductor and this diode, and the current will charge the capacitor, and the current, some of the current will also move to the output voltage. So जब स्विच ऑफ है ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो दिस मेक्स अ वन सिंगल लूप. ठीक है, इस सिंगल लूप में क्या हो रहा है? इनपुट करंट, input supply is connected, II current is flowing, diode is forward bias. ठीक है, और ये इसमें कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है और some of the current is flowing to the output voltage, right? So now we have to draw the switch off condition. This is here what we have, what we did, only remove the switch because the switch is off. So in this case what happens, the input voltage, अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है कि current has only one loop. It is not as previous. During the on cycle current has two loops, so one loop input and one is the output loop. But in this case the entire current is flowing from the inductor to the diode to the capacitor and to the output load, and it returns back to the input voltage. So this is the description of the input current. So in this case II will equals to ID. Input current is also, it's the same thing, diode current, and is dividing into two branches, IC and I out. One more thing we have to describe here कि इस केस में इससे पहले ऑन साइकिल थी और इस ऑन साइकिल में क्या हुआ था, लेट्स सपोज कि अगर ये 100 वोल्ट इनपुट था तो इसने ऑन साइकिल ने इसे एनर्जाइज किया है, एंड दिस विल आल्सो बिकम 100 वोल्ट. ठीक है, तो ये जब फुल एनर्जाइज हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितने हो गए? 100 वोल्ट. और यहाँ पर कितने 100? जब इस ऑन साइकिल में इस 100 वोल्ट की इनपुट सप्लाई ने इसे एनर्जाइज कर दिया है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज जो वोल्टेज है वो भी 100 वोल्ट है. इस सपोज इट्स फुली एनर्जाइज, 100 वोल्ट यहाँ हो जाएंगे. अब लास्ट मोमेंट ऑफ द ऑन पीरियड में ये 100 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है. जैसे ही आप ऑन से ऑफ की तरफ स्विच होंगे तो इस जस्ट ऑफ के वक्त, जस्ट स्टार्ट ऑफ द ऑफ के वक्त यहाँ पर दो वोल्टेजेस हैं. एक ये सप्लाई वोल्टेज है और एक सप्लाई वोल्टेज है. लेट्स सपोज इफ इट इज 100 वोल्ट, सो दिस इज आल्सो 100 वोल्ट, एंड ये दोनों वोल्टेज ऐड हो रहे हैं. देखें व्हाई इट इज एडिंग, देखें माइनस प्लस, ये दोनों वोल्टेज ऐड होकर के यहाँ पर इस जगह पे आ रहे हैं. इस जगह पे कितने वोल्टेज होंगे? इफ this was 100 वोल्ट, ये भी 100 वोल्ट है, तो there will be 200 वोल्ट. ये दोनों वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगे. So the 200 voltage will appear across the capacitor, and because the capacitor and this output load is parallel, so इस capacitor पे भी 100 वोल्ट रहेंगे और output load पे भी 100 वोल्ट रहेंगे. But in this case जैसे ये तो मैंने बताया 100 उस वक्त होगा जब जस्ट स्टार्ट ऑफ द ऑफ पीरियड, लेकिन जैसे ऑफ पीरियड स्टार्ट शुरू हो जाएगा तो अब ये डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएंगे इंडक्टर. ठीक है, इस साइकिल में इंडक्टर एनर्जाइज हुआ था, इस साइकिल में इंडक्टर डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा. तो डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे. एट द बिगिनिंग जो
100 volt at the beginning it was 200 volt, but जैसे जैसे ये डी एनर्जाइज होगा वैसे वैसे वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ऑन साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। ऑफ साइकिल में कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज, क्योंकि यहाँ पर 200 volt. I mean, the voltage is double than the input voltage. So जब जाहिर पता है, आप जब कैपेसिटर पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज रख देंगे तो कैपेसिटर will start to charge. So if you try to understand the operation of this equivalent circuit, then it will be very easy to understand this one कि इस on period में क्या हो रहा है। There are two functions कि इंडक्टर एनर्जाइज हो रहे हैं और एट द सेम टाइम जो कैपेसिटर पिछली पीरियड में जो फुली एनर्जाइज चार्ज हुआ था वो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। इस केस में ऑफ पीरियड में क्या हो रहा है कि ये ऑफ पीरियड में, ऑफ पीरियड से पहले इंडक्टर फुली एनर्जाइज था, अब इंडक्टर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है टू द आउटपुट वोल्टेज, और जब इंडक्टर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है इंडक्टर डी एनर्जाइज हो रहा है। सो इन दिस केस इंडक्टर इज डी एनर्जाइजिंग एंड एट द सेम टाइम जो डी एनर्जाइज की जो 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 एनर्जी है इज बेसिकली चार्जिंग दिस कैपेसिटर। तो देयर आर टू ऑपरेशन। इस अगर हम सिर्फ इंडक्टर को कंसीडर करें तो ऑन पीरियड में इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है और ऑफ पीरियड में इंडक्टर डी एनर्जाइज हो रहा है। दैट इज व्हाई इट्स पोलैरिटी इज चेंज प्लस माइनस, और यहाँ पे डी एनर्जाइज हो रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द ऑपरेशन कि यहाँ पर एनर्जाइजेशन हो रही है, यहाँ पर डी एनर्जाइजेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, if we take this output, so इसमें कैपेसिटर जो कि चार्ज था पिछली साइकिल में वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है एंड आउटपुट में वो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर इसमें कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो गया तो इस साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो इसके बाद दोबारा ऑन साइकिल आ गई, ऑन साइकिल आ गई तो इसमें ये दोबारा डी एनर्जाइज डिस्चार्ज हो रहा है। ये कंप्लीटली जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा काफी हद तक तो फौरन फिर ऑफ साइकिल आ जाएगी। जब ऑफ साइकिल आ गई तो इसमें कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू हो गया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। So the power delivered from Vi during T on is P on is equal to VIII. हेलो हेलो सर। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये स्टूडेंट सर रिमूव हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, सर कोई रिमूव कर रहा है। अच्छा, मैं फिर इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ये यही मसला है सर। हेलो, ओके। पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट एंड गेस्ट, ठीक है। Announcement correct who can present everyone. Now my question is no. Who can present? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। देखिए अब आवाज आ रही है आप लोग। हेलो, आप लोग बोले। हेलो हेलो, नहीं आ रही ना। हेलो माइक फॉर अटेंडीज। हेलो, चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। हेलो मीटिंग चैट।
सर आ रही है आवाज। हेलो सर आवाज हाँ चलो ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है, थैंक यू। सो आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? यहाँ पर कितने अटेंडीज हैं? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, वी हैव गुड अटेंडेंस. So this topic is very important. Please raise your hand or ask your question. So okay. So hopefully you understand the equivalent circuit. If you understand the equivalent circuit, if you understand the equivalent circuit well, so अब यहाँ पर अगर आप theoretically देखें क्या हो रहा है इस जगह पे, एनर्जी गेन हो रही है, यहाँ पे एनर्जी डिलीवर हो रही है. तो अब देखें यहाँ पर इंडक्टर ऑन साइकिल में एनर्जी गेन कर रहा है और ऑफ साइकिल में एनर्जी डिलीवर कर रहा है. जो उसने गेन किया था वही एनर्जी उसने डिलीवर कर दिया. और इसमें क्या हो रहा है, कैपेसिटर ने जो ऑफ साइकिल में चार्ज हुआ था फुली, वो ऑन साइकिल में डिस्चार्ज हो रहा है. डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद दोबारा ये यहाँ से चार्ज होना शुरू हो जाएगा. जैसे ऑफ के बाद फिर ऑन साइकिल आएगी, ये दोबारा डिस्चार्ज हो जाएगा. तो द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज कंटिन्यू. डिस्कनेक्ट नहीं हो गया? So this is basically the conversion of the energy from on state to off state. अब ये कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है, इसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है इसके पास इंडक्टर से. इंडक्टर के पास कहाँ से एनर्जी आई थी? ऑन पीरियड में इंडक्टर ने एनर्जी गेन किया था. कोशिश करें समझने की, बहुत आसान लगेगा. आप बगैर समझे भी एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपका बहुत बड़ा लॉस है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं इसीलिए बहुत ज्यादा इस पे अटेंशन दे रहा हूँ. तो अगर आप ओवरऑल देखें यहाँ पर वो क्या रहा है कि इंडक्टर एनर्जी गेन कर रहा है और यहाँ पर एनर्जी डिलीवर कर रहा है टू द लोड. डिलीवर कर दिया, फिर ऑन पीरियड में इंडक्टर ने फिर एनर्जी गेन किया, फिर ऑफ पीरियड में फिर डिलीवर कर दी एनर्जी. So the input energy is basically यहाँ पर स्टोर हो रही है और आउटपुट यहाँ पर इनपुट एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो आउटपुट में ट्रांसफर हो रही है. यही वजह है कि आउटपुट में किस तरह ट्रांसफर हो रही है, ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और इस जगह पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप और से देखें, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू एनर्जी डिलीवर. अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लॉसलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 99% एफिशिएंट है या 100%, इसमें कोई लॉस ही नहीं हो रहा है. तो जो इनपुट एनर्जी इंडक्टर पे इंडक्टर ने जो एनर्जी गेन की थी वही एनर्जी एक्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर टू द आउटपुट अगर लॉसलेस ट्रांसफॉर्मेशन है. जो इनपुट में हमने एनर्जी गेन किया वही आउटपुट में आ गया. ठीक है, लेट्स कंसीडर इट्स डेरिवेशन. सो पावर, पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर निकालना चाहेंगे कि इनपुट में कितनी पावर है, फिर आउटपुट की शायद पावर निकालेंगे. लेट्स सी, पावर डिलीवर फ्रॉम वी आई ड्यूरिंग टी ऑन इज वी आई आई आई. ऑन टाइम पे पावर क्या है, P इज इक्वल टू वी आई. ऑन टाइम पे वोल्टेज कितने हैं, इनपुट वोल्टेज है. ऑन टाइम पे करंट कितना है, सिंपल आई करंट है. इस बेसिकली आई ऑल्सो आई स्विच. ठीक है, सो पावर ऑन मींस पावर डिलीवर और पावर गेन during the on period is VI.
अगर आप पावर की जगह पे एनर्जी लेना चाह रहे हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द टाइम. So energy stored in inductor during t on time is V I और इसे हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे. What is t here? T here the t on time. So energy on is V I t on. Similarly हम शायद आउटपुट के लिए भी निकालेंगे. Power delivered to load by inductor in off in t of time. T of time कौन सा है? ये वाला t of time है. इस t of time में जो पावर डिलीवर टू लोड बाय इंडक्टर, इंडक्टर जो पावर उसने गेन किया था वो डिलीवर कर रहा है टू लोड ड्यूरिंग द ऑफ पीरियड. क्या होगा? वी पहले इज बेसिकली पावर इज इक्वल टू वी आई, इंडक्टर की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट. इंडक्टर वोल्टेज यहाँ पर कितने हैं? वी एल हमने नहीं लिखा है. सिंपल इसका ये होना चाहिए था, पावर ऑफ इज इक्वल टू power delivered by the inductor is equal to VL multiplied by II. But here we have used not VL directly. इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमने मेजर की. इसके क्रॉस वोल्टेज कितने हैं? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज. दिस वोल्टेज कितने हैं? ये आउटपुट वोल्टेज है. दिस इज आउटपुट वोल्टेज. यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं? इनपुट वोल्टेज है. तो अगर आपको इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करना है तो आप क्या करेंगे? इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उसको माइनस कर देंगे इस टर्मिनल पे वोल्टेज. इस टर्मिनल पे वोल्टेज V आउट है और माइनस V आई है एंड द करंट थ्रू दिस वन इज II. आपको एनर्जी निकालनी है. एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इंडक्टर टू लोड ड्यूरिंग t ऑफ टाइम इज, एनर्जी के लिए क्या करेंगे? हम यही लिखेंगे लेकिन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो एनर्जी ड्यूरिंग ऑफ पीरियड V out minus V I और टाइम कितना है? This only valid for the t of time. If the losses are ignored, जैसे मैंने बताया कि आप सिंपल कैलकुलेशन में आप ये सब सपोज कर लेते हैं, क्योंकि अभी सपोज करने के लेट सपोज के लॉसेस यहाँ पर नहीं है. सिंपल इक्वेशन निकाल. It's not the equation for the researcher or the designer. It's the equation for just for the beginners only. So if the losses are ignored, then ये जो पावर हमने डिलीवर किया है ऑन टाइम, पावर जो हमने गेन किया है ऑन टाइम में will equals to the power delivered during the off time. So power on is equal to power off. What is power on? Power on की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ लिख दी हुई. पावर ऑफ की वैल्यू ये वैल्यू आ गई. ठीक है. आप ये देखें यहाँ पर भी I है. So if we divide by I, if you divide by I, so यहाँ पर VIT on ये आ गया and ये क्या आ गया? ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? अच्छा, we have rearranged this one. यहाँ पर माइनस था, माइनस पार्ट को हम यहाँ पर we have brought here one on one side. So V out T of और इस साइड को हमने इधर कर लिया. So hopefully you understand just rearrangement of. Okay, and now we get T on Vi को कॉमन ले लिए, T on plus T off, and we know T on plus T off is equal to, ये क्या है? T on plus T off. अच्छा, ये T off यहाँ पर है. V और T off को हमने डिवाइड कर दिया. It is divided by the right hand side. अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या इन्होंने? T on plus T off is basically time period. So we replace this one with the time period. The T off is still there. If we continue this one, so V out is equal to VIT divided by T off. VIT आ गया और T off is equal to T minus T on. ठीक है. टोटल टाइम पीरियड में से अगर मैं ऑन टाइम पीरियड निकाल दूंगा तो फिर मेरे पास T of time आ जाएगा. So this is simple. And further on इस न्यूमरेटर को भी T से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी T से डिवाइड कर दिया. तो we end up with this equation. And here we have only Vi. T by T is equal to 1 and T on by time period. ये क्या है? Duty cycle है. That is K. K is equal to duty cycle D
or is equal to T on divided by T. So this equals to K. So now we can find that. So this equation is simplified. V out is equal to Vi है, Vi यहाँ पे ले over 1 over 1 minus K. Now we study this one. This is basically output voltage, and what we understand that the output is a boost converter, so the output voltage should always be greater than the input voltage. Let us analyze this one. Let's suppose by changing value of K, V out can be step up. Okay, how? For example, K की value अगर आप पास 0 है, what will happen? If K is 0, to output voltage will equals to the input voltage, and K 0 का मतलब ये हुआ कि ड्यूटी साइकिल 0 है. ड्यूटी साइकिल 0 का मतलब ये हुआ कि आपने स्विच को कंप्लीटली ऑफ किया हुआ है. जब कंप्लीटली ऑफ किया है तो जो इनपुट वोल्टेज होगी वही आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. K is equal to 1. ओके, पहले हमने 0 कर लिया था. अगर K की वैल्यू 1 है तो 1 minus 1 0. It means output voltage will be infinite. Output is very high as infinite. ठीक है, आउटपुट वोल्टेज very infinite मतलब infinite का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज infinite में 1000 वोल्ट. That is not practically possible. It's only theoretically, not practically possible. ठीक है, so it says कि आउटपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा होंगे, इनफाइनाइट होंगे अगर K की वैल्यू 1 करती है. एंड इट इज नॉट आल्सो प्रैक्टिकल, क्योंकि K इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया ड्यूटी साइकिल 100%. ड्यूटी साइकिल 100% का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर जो स्विच है इसे आपने मुकम्मल तौर पर कंटिन्यूसली ऑन किया हुआ है. दैट्स नॉट पॉसिबल. अगर ऑन करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी. ठीक है, सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल. लेट्स सपोज आउटपुट इज वेरी हाई. इफ K इज इक्वल टू 0.5, अगर K इज इक्वल टू 0.5 है यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 और 1 0.5 का मतलब यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी. So the output voltage will equals to the 2 times of the input voltage. So output is 2 Vi, and if K is equal to 0 मैंने पहले बता दिया आपको. Thus in this boost converter, the practically output is always greater than minimum output voltage. कितने हैं कि अगर आप स्विच को ऑफ रखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज विल इक्वल्स इनपुट वोल्टेज. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब ये होगा कि ड्यूटी साइकिल कुछ ना कुछ तो आप रखेंगे, ठीक है ना, नॉट 0. जब कुछ ना कुछ रखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए बूस्ट कन्वर्टर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज. इन जनरल आउटपुट वोल्टेज कैन बी इन द रेंज. अच्छा, अब आप ये देखें it says that the output voltage can reach to infinite. That's not possible. So in general, output voltage can be in the range of 5 to 6 times of the input voltage. For example, अगर input voltage 100 है, आप 500 600 voltage ले सकते हैं. इससे ज्यादा output अगर आप बनाएंगे तो ये unstable हो जाएगा. So for the stable operation, you should remember that the output voltage should not be more than 5 or 6 times. Otherwise, you will lose the controllability. तो अगर आपके पास 200 वोल्ट है, output voltage probably you can get 1000 volt. Right? Any question? Converter derivation. I out during I on time is IC. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि I out during on time is IC. कहाँ IC? अच्छा, I out कहाँ पर है? ये है. During on time ये है. Yes, that is correct. I out is equal to IC. बिल्कुल सही, दोनों सीरीज में. For both on and off time, mask पहन लें. For both on and off time, I out is in essence the function of I. कैसे? For both on and off time, I out. कहने का इस on time में I out is a function of I. बिल्कुल सही है. जितनी ज्यादा एनर्जी इसमें
स्टोर होगी। तो इस पीरियड में कैपेसिटर ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सो आई आउट इज इक्वल टू आई सी इज द फंक्शन ऑफ द इनपुट करंट। ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो ये चीजें हैं, मेरे ख्याल में मैं आपको अभी ना कराऊं क्योंकि इट्स अ न्यू टॉपिक। तो एक मिनट, इसको मैं कल कराऊंगा, ठीक है भाई। नाउ इट्स टाइम फॉर द अटेंडेंस। Attendance and the question answer. If you have any question, you can ask. Otherwise, I'm taking attendance. कहाँ गया? Attendance, attendance. Attendance में ले रहा हूँ. Download attendance list. How many? F21. So we have taken the attendance here. If you have no question answer, then we have to close this meeting.